Hello everyone and welcome to the series of lectures on correlation analysis. This topic is covered in the first year of the BBA program offered by Barkatullah University. Your faculty is Dr. Suchitra Shrivastava, Professor in the Department of Management in the SAGE group of institutions. In today's lecture, we will be talking about Spearman's rank correlation method. Now, Spearman's rank correlation coefficient, which is generally denoted by capital R, gives the magnitude as well as the direction of the relationship between two qualitative variables. Remember, in the previous lecture, when we were talking about the Karl Pearson's method, we were talking about quantitative variables. Now in this we can also deal with qualitative variables. Generally used when the variables are of qualitative nature. That is, they are either on the ratio or on the interval scales. Now, it can be used when qualitative data, it can also be used when quantitative data is first ranked. That is, the quantitative data is also first put in ranks or they are ranked, and then we may compute R or the Spearman's rank correlation coefficient. Now, let us see how the Spearman's rank correlation coefficient, which we spoke about in the earlier slide, is computed. In the earlier slide, we denoted the correlation coefficient as capital R. Now, some authors prefer to denote it by the Greek letter rho. If you spell it, it is R-H-O, rho. This letter that you can see on the left side of your screen. So, rho in this case, or capital R, as you may denote it, is given by 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n. Now, what is d? D is the difference in ranks of variables 1 and variable 2. So, we can write it as d is equal to r1 minus r2. What is n? N is the total number of paired observations. Now, please note that the interpretation of capital R or rho is the same as the interpretation of small r or the Karl Pearson's coefficient of correlation. Now, coming to the advantages and limitations of this method. Now, the main advantage of this method is that it gives the direction of relationship, the magnitude of the relationship, and it also helps in the objective interpretation of R or rho. We may add one more advantage, that is, it can be used for qualitative data. Now, the major limitation of this method is that the computations or the calculations become complex in case of tie in ranks. इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास दो रैंक्स एक समान हो जाती हैं तो ये हमारे कैलकुलेशंस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. I now suggest that students please note down this question and try to solve it. Now here the ranks of 15 students in two subjects A and B are given. The two numbers within the brackets denoting the ranks of the same student in A and B subject respectively. Okay, so what will we do over here? We will say that let ranks in subject A be denoted by R1, let ranks in subject B be denoted by R2, okay? And then we will tabulate these points. Let us see how will we do it. अच्छा, अब देखिए कैसे हम tabulate करेंगे इसको. हमारा जो पहली वैल्यू थी वो थी 1, 10.
तो कैसे हम लिखेंगे उसको? 1 को हम पहले वाले वेरिएबल में लिखेंगे इधर 1, और 10 को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे यानी R2 की जगह। इसी तरह से दूसरी वैल्यू थी मेरी 2,7, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 10 को अगले कॉलम में लिखेंगे R2 वाले कॉलम में। इसी तरह से सभी 15 जो वैल्यूज हैं उनको हम टैबुलेट कर लेंगे यानी टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना है डी क्या होता है? R1 माइनस R2, तो सबको डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलेंगे? R1 पहली वैल्यू को देखिए आप लोग ध्यान से, सो 1 माइनस 10 इज -9। सेकेंड वैल्यू को देखो, 2 माइनस 7 इज -5। तो यहाँ पे जो भी साइन आ रहा है उस तरह से हम लिखते जाएंगे। 3 माइनस 2 इज 1। इसी तरह से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे R1 माइनस R2। इसके बाद अगला कॉलम जो होगा हमारा, उसमें हम निकालते हैं डी स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इसी तरह से ये सारी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसका टोटल निकालेंगे। अब डी स्क्वायर की वैल्यू जो थी हमने पिछले स्लाइड में निकाली थी, आई थी 272। एन क्या है मेरा? टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। आपको पता है कि 15 बच्चों का के नंबर है ये, तो एन मेरा हो गया 15। तो ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी अपने फॉर्मूले में। यहाँ पे आप रोज लिख सकते हैं या कैपिटल आर लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एम। सारी वैल्यूज को डाल दीजिए, कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ रहा है 0.51। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? ये 0.5 बीच में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहली बात तो ये प्लस में आया है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि देयर इज मॉडरेट, 0.5 बीच में है मतलब मॉडरेट के आसपास है, तो वी विल इंटरप्रेट दैट देयर इज मॉडरेट positive correlation between marks in the two subjects. Now you can see that this is how the interpretation is written. क्या जरूरी है इसमें? मॉडरेट है क्योंकि 0.5 के आसपास है, पॉजिटिव है, आपने देखा कि जो कैपिटल आर या रो की वैल्यू आई वो पॉजिटिव थी, तो हम बोलेंगे that there is moderate positive correlation between marks obtained by students in the two subjects A and B. Please remember कि आपको जब भी कोरिलेशन का सवाल करते हैं इंटरप्रिटेशन देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। So I hope that you have understood the concept of the Spearman's correlation coefficient. Thank you students for your attention and time.